They are part of what some have termed the COVID generation, promising young talents whose future has been torn apart by the coronavirus pandemic. कोविड से पहले मुझे लगता था कि मैं डॉक्टर बनूंगी और फिर मैं बाहर जाऊंगी, फिर मैं लोगों का इलाज करूंगी। और जब से कोरोना आया तब से मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर भी जा सकूंगी या डॉक्टर बनूंगी, क्योंकि कोरोना ने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए हैं। बच्चों का भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। बच्चे स्कूल की मैं फीस दे ही नहीं सकता। फीस इस वजह तो नहीं दे सकता कि बाहर मैनू मजदूरी मिले तो मैं जड़ा ना मजदूरी लियावां करके तो जड़ा ना फीस किते दवां ना। फीस मैं दे नहीं सकता तो मेरे बच्चे लिहाजा घर ही ने। Alone and socially isolated, many children in Pakistan have dropped out of schools as a result of the pandemic. And they're in danger of being drawn into hazardous economic activities and violent crimes. तो जो बच्चे आपको सड़क के किनारे या किसी ट्रैफिक सिग्नल पे आपकी गाड़ी के स्क्रीन पे वाइपर मारते हुए नज़र आते हैं, वो कल को जब बड़े होंगे तो वो वाइपर नहीं खड़े होंगे, उनके हाथ में बंदूक होगी और फिर वो बंदूक के निशाने पे आपको कहेगा कि अब गाड़ी से उतरो, ये गाड़ी अब मेरी है, क्योंकि समाज ने उसको कुछ नहीं दिया, समाज ने उसको छोड़ दिया। It has been more than 2 years since the pandemic began. What will become of the hundreds of thousands of these vulnerable children who have become the hidden victims of the COVID-19 pandemic? Pakistan, a nation buckling under the weight of the coronavirus pandemic. With the inflation rate reaching its highest levels in 70 years, coupled with widening trade deficits and depleting foreign exchange reserves, Pakistan economy is sorely in need of life support. In fact, the economy was already in shambles even before the pandemic began. The health crisis has only made it worse. Many people have lost their jobs. Their livelihood has also been severely destroyed by the ongoing pandemic. And each time a crisis erupts, quite often it's the ordinary citizens and children who will have to bear the full brunt of it. Abdullah Dayo works for the Progressive Youth Forum. It's an organization that is committed to the cause of rural development. It's also active in empowering the youth through education. Its Secretary General, Abdullah Dayo, has seen how much damage the pandemic has caused to poor families in Pakistan. कि एक नौजवान है, उसको नौकरी नहीं मिल रही। उसने क्या सोचा कि बड़ी मुश्किल से कुछ कर्जा रिश्तेदारों से लिया, कुछ कर्जा बैंक से लिया। उसने करीम पे एक गाड़ी चलाना शुरू की। करीम पे गाड़ी चलाते चलाते ये हुआ कि वो अपनी किस्तें अदा कर रहा था, घर भी चला रहा था और उसके 2 बच्चे भी थे। तो इतने में कोविड आ गया, उसका कारोबार टिप हो गया। उसके बाद लॉकडाउन हो गए, स्मार्ट लॉकडाउन, मुख्तलिफ़ किस्म की नौयतें हमने देखी, तो उसका वो बिज़नेस रुक गया। अब उसके पास और कोई चारा नहीं है। तो सबसे पहले उन पे ये इम्पेक्ट आया कि उसने अपने खाने पीने की जो अशिया थी, राशन, वो कम किया। खाने पीने की अशिया कम करने के बाद दूसरा जो इमीडिएट काम उसने किया, उसने पहले अपनी बेटी को स्कूल से निकाला, फिर उसके बाद उसने अपने बेटे को भी स्कूल से निकाला। तो वो जब बेटे और बेटी को स्कूल से निकाला, क्योंकि वो, लेकिन ये जो इम्पेक्ट बढ़ा तो हमारा जो पहले ऑलरेडी इस मुल्क में तकरीबन कोई 50 लाख के करीब नौजवान बेरोज़गार बैठे थे और इमीडिएटली सिर्फ कोरोना की एक जो 2020 और अभी 21 की रिपोर्ट आई है, उसकी स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 50 लाख और मज़ीद बेरोज़गार हुए। तो हमारे पास 1 करोड़ की आबादी ऐसी हो गई जो कि कुछ नहीं कर रही और नौजवान है।
The prolonged pandemic has caused poverty to spread across various cities. With their livelihoods severely affected, it has left many families struggling to put food on the table. Poverty has also compelled them to pull their children out of school. Children are being sent to work rather than to the classrooms to help relieve their financial woes. राउंड अबाउट कोई बताते थे कि 20-25 मिलियन बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल है। फिर आउट ऑफ स्कूल के बाद जो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हुआ करता था वो यही था कि वो बहुत सारे बच्चों का ड्रॉप आउट हो जाता है, वो प्राइमरी लेवल के बाद हो जाता है। और फिर सेकेंडरी लेवल के बाद जो गरीब घराने होते हैं उनके अंदर इशू होता है कि वो बच्चे जो हैं ज़्यादा स्कूल्स ना होने की वजह से पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल की फीसेस नहीं भर सकते थे। तो ये इस तरह से एक पूरी आप समझें कि एक सिस्टमेटिक वे में एक बच्चा ड्रॉप हो जाता था। हमारी गवर्नमेंट ने इसमें ज़्यादातर कोशिश ये की कि हमने बहुत सारी जगहों पे स्पेसिफिकली इफ़ यू टॉक अबाउट इन पंजाब तो हमने इस तरह से किया कि हमने इवनिंग्स क्लासेस स्टार्ट कराई और उन इवनिंग क्लासेस में हमने मेक श्योर किया कि जिन बच्चों के डिस्टेंस की वजह से यानी कि स्कूल दूर हो गया, अब प्राइमरी स्कूल घर के करीब था और बाद में जो सेकेंडरी स्कूल है वो घर से दूर हो गया। But despite the government's best efforts to keep the children and youth in school, the number of school dropouts keeps rising exponentially. A report by UNICEF says that some 22.8 million children aged 5 to 16 are not attending school in Pakistan. It represents about 44% of the total population of children who have dropped out of school in that age group. "13-year-old Amor, better known by his nickname Lucky, has been living in this slum area, also known as Shopper Colony, for his whole life. It's one of the many illegal settlements which have mushroomed in the nation's capital, Islamabad, in the last few decades. He lives with his father, mother and younger brother in a region notorious for its squalid and unhygienic conditions. His father, Sohaib Imran, had once worked as a sales executive in a real estate company, earning about $170 per month. Despite the meager income, they were still able to get by and were content with what they had. That was until January last year, when his father contracted COVID-19. लकी के फादर तकरीबन 3 हफ्ते हॉस्पिटल रहे हैं। फिर इसके बाद हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि मैंने लोगों से पैसे लिए। पैसे इतनी मुश्किल से लोगों ने मुझे दिए। फिर इसके बाद मैंने हॉस्पिटल पैसे लगाए। फिर इसके बाद डॉक्टर ने बहुत सारी मुझे उम्मीदें दिलवाई कि ये ठीक हो जाएगा, पर 3 हफ्ते के बाद वो वेंटिलेटर पे रहा। फिर इसके बाद उसकी डेथ हो गई। ये जब हम गए थे ना शादी पे। Lucky's father, Sohaib, was the sole breadwinner, but he took good care of his family. Until today, Lucky still remembers all the good things that his dad had done for him. हमने खाना भी खाया था, आइसक्रीम भी खाई थी और उन्होंने मुझे एक भालू लेके दिया था जो वो अभी भी मेरे पास है। उसको मैं जब भी देखता हूँ मुझे बाबा की बहुत याद आती है। आखिरी दफ़ा जब बाबा मुझे स्कूल छोड़ने जा रहे थे तो बाबा ने बोला था कि अगर तुम अच्छे ग्रेड से पास होते हो तो मैं तुम्हें कंप्यूटर लेके दूँगा। तो वो मुझे ज़्यादा पढ़ाना चाहते थे और वो मुझे एक आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते थे। तो मेरा भी दिल करता कि मैं स्कूल जाऊँ, लेकिन अब मैं स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। Uppermost in Lucky's mother's mind now is how to feed her 2 children due to the sudden loss of income. Bushra resorted to borrowing money from relatives out of desperation to help her tide over the difficult period. But there's only so much that she can do to dig herself out of the financial hole. घर के हालात इतने ख़राब थे, फीसों की वजह से जो प्रिंसिपल थी उसने पहले मुझे बुलाया स्कूल में कि 6 मंथ हो गए आपके बच्चे की फ़ीस नहीं आ रही। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि इसके पापा की डेथ हो गई है तो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, तो
थोड़ा सा मुझे टाइम दें, मैं इनकी फ़ीस वगैरह का थोड़ा सा सिस्टम करती हूँ, क्योंकि जो मेरे रिलेटिव्स थे उन्होंने थोड़ी सी मेरी सपोर्ट की और ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सके, इसलिए कि वो दोबारा से भी उनसे पैसे मांगना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था और उन्होंने इनकार किया। तो फिर 6 महीने के बाद बच्चों को उन्होंने स्कूल से निकाल दिया, इसलिए कि उन्होंने पहले मुझे फ़ोर्स अलाउ किया था कि आप 6 महीने की इसकी फ़ीस दे दें वरना हम इनको स्कूल से निकाल देंगे। तो मेरे लिए बहुत ये मरहला मुश्किल था और मेरी ज़िंदगी का उस टाइम बहुत टाइम। The mounting debt left Bushra with no other choice but to put Lucky to work in the hope that he will help relieve the family of its huge financial burden. लकी के पापा के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत चेंज हो गई, इसलिए कि घर के कामों को मैनेज करना, बाहर जाके ये सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया। और लकी के फादर की डेथ के बाद ही इसको लकी को मैंने काम पे डाला, इसलिए कि घर के हालात बहुत मुश्किल थे, बहुत मुश्किल से मैनेज करना पड़ा बच्चों को ये। और जब मैं बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि लोगों के बच्चे जा रहे हैं और मेरा बच्चा क्यों नहीं जा रहा। तो मेरे पास तो पैसे नहीं हैं जिसकी वजह से मैं इसको स्कूल नहीं भेज सकती। Every day, Lucky works from 8 in the morning till late at night at Zia Balti, a restaurant not too far from his house. Although he works as a waiter, he's often asked to wash the dishes and clean the floor. Still, he feels thankful to the restaurant owner, Kamran Bati, for offering him a job. जी लकी मेरे पास तकरीबन 8 महीने पहले काम के सिलसिले में आया था। मेरे पास तो जगह नहीं थी कोई नया वर्कर की, तो लेकिन इसने जब मुझे अपने घरेलू हालात बताए, क्योंकि इसके वालिद की डेथ हो चुकी थी कोरोना की वजह से, तो उस वक्त मजबूरन मुझे इसे काम पे रखना पड़ा। तो मैं तो इसको तकरीबन महीने की 18,000 रुपया सैलरी देता हूँ और इसके अलावा मंथली भी इसकी हेल्प कर देता हूँ। Lucky hopes that one day he will be able to continue his education. But for the moment, he needs to help his mother pay for the rent and put food on the table. It's a sad reality where children are being deprived of their childhood and forced to take on the role of an adult. A lot of people, a lot of youngsters, young kids, they have lost their parents. A lot of people whose parents are alive, but they have lost their jobs. So like in these both cases, I know a lot of people who at the age of 14 or 15 have stopped going to schools, have stopped going to colleges. They are otherwise closed, but they have just stuck out of there and they have started to work. And they are not working in some multinational company. They may be polishing boots. And even now if you open the schools, they are unable to pay the fees and continue the education of their children. So there would be a whole disruption in the society. और ये बहुत बड़ा अलमिया है और ये लम्हा फ़िक्रिया भी हम सब के लिए। गवर्नमेंट यकीनन इसमें अपना जो कर सकती है, अपने आप समझें कि अपनी उसकी लिमिटेशंस हैं गवर्नमेंट की, और जो आपको मैंने पहले बताया कि बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं जिनकी वजह से अपनी उनकी लिमिट्स बन जाती हैं। As for Lucky, he still has not given up his dream of becoming a soldier one day. मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था और मेरे बाबा भी यही चाहते थे कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं, पर अब मैं स्कूल नहीं जाता और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं स्कूल जा सकूं। पर मैं मेहनत करूंगा, काम करूंगा और साथ साथ पढ़ूंगा भी और एक आर्मी ऑफिसर बनूंगा और अपने बाबा का ख्वाब पूरा करूंगा। For now, many children in Pakistan, including Lucky, have found their lives, education and dreams being upended by a disease that has taken away the lives of their loved ones. Is there still hope for these children?
COVID-19 has pushed an estimated 80 million more people in Asia into extreme poverty. That's according to the latest report released by the Asian Development Bank. And among them is Pakistan, a nation that has been struggling to keep its economy afloat. At this village called Kala Saidan, some 44 kilometers away from Rawalpindi, Pakistan's fourth largest city, 19-year-old college student Airij and her mother, Shamsad, are attending a church service. The family earns a living by offering sewing services to residents of this village, some of whom are part of this congregation. Although life was simple, it's a lot more comfortable for the family just a few years ago. Airij even did well in school and was able to enter college. But her family's situation took a sudden turn for the worse after a tragedy struck unexpectedly 2 years ago. Airij was then walking with her father on their way home from church. Upon reaching home, Dilshad, who used to work as a plumber, fell ill. Her mum also started to develop a fever soon after. They were then admitted to a hospital after experiencing some breathing difficulties and tested positive for COVID-19. तो मम्मा तो ठीक हो गई, लेकिन बाबा की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई, उन्हें काफ़ी ज़्यादा फीवर होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उनको अलग एक रूम में रख दिया गया। तो जहाँ पर हमें मिलना भी नहीं थे देते, कुछ भी नहीं था, मतलब बस मम्मा वहाँ पर जाती थी, ना मैं जाती थी ना मेरी बड़ी आपी जाती थी, हम लोग बस घर पे रहते थे, तो मतलब वहाँ पर हमारा मिलना नहीं था होता। हॉस्पिटल में पापा की काफ़ी सीरियस कंडीशन रही, बाबा को देखा भी नहीं क्योंकि कोरोना की वजह से मिलने नहीं थे देते, कहते हैं कि जी एक दूसरे को लग जाता है मिलने की वजह से, अलग रूम में थे वो। Dilshad's condition deteriorated rapidly. He died on June 16, 2020. The death of her father, who was the sole breadwinner, turned the family's life upside down. They were scrapping by to survive every day. Whatever little savings they had were all used up in a matter of weeks. Poverty has also disrupted Airij's plans to continue with her college education. चल रहा है, कोरोना की वजह से हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। कोरोना की वजह से बाबा की डेथ होगी, फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से हम लोग कोई भी नहीं था बाहर जा सकता कुछ भी करने के लिए, जॉब करने के लिए। तो घर पे रहकर मामा ने काम करती थी, सिलाई का थोड़ा बहुत हो जाता था। कई बार तो मामा रात रात बैठकर काम करती रही हैं, मतलब 12-12 घंटे उन्होंने बैठ के काम किया, जिसकी वजह से उनकी आईसाइट पे भी बहुत बुरे असरात हुए हैं कि उनकी आईसाइट भी वीक हो गई है, जिसकी वजह से मुझे और मेरी बड़ी आपी को मिलकर हमने उनके साथ उनकी हेल्प की और आज भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मतलब मैं पढ़ नहीं सकी, तो बाबा की डेथ की वजह से हम लोग वहाँ के वहाँ ही रुक गए हैं, ना मैं पढ़ सकी ना मेरी आपी। तो जब बाबा की डेथ हुई थी तो घर के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। बाबा की जॉब से ही बाबा ही सब घर के खर्चे वगैरह पूरे करते थे। तो जब उनकी डेथ हुई तो सारा बर्डन मामा पर आ गया। उस टाइम ना मम्मा के पास कोई जॉब वगैरह थी, कुछ भी नहीं था। तो कुछ डेज़ के लिए ख़ानदान से आते रहे, फैमिली में से मेंबर्स आते रहे, कुछ हेल्प की। तो उसके बाद ना वो कभी आए ना उन्होंने कभी पूछा। तो हम लोग कभी खाना खाकर सोते थे, कभी नहीं भी थे खाते, ऐसे ही सो जाते थे। To make ends meet, the family now relies on their mother's stitching job to help them get through the difficult period. Her $100 a month income, however, is not enough to cover their daily expenses. After paying for rent and utilities, there's hardly anything left for them to spend on, let alone helping her daughters to complete their education. मामा ने डांटा, गुस्से से बोला कि जब मैंने एक दफ़ा बोल दी है नहीं जाना तो नहीं जाना। तो उसके बाद मामा ने कहा नहीं जाना आपने कॉलेज, मेरे से इतने खर्चे पूरे नहीं होते कि मैं आपकी स्टडी का भी खर्चा उठाऊं।
जब मामा मुझे डांटती थी गुस्से से, मैं रोती थी। उस टाइम मामा कुछ भी नहीं थी कहती, लेकिन रात को मामा खुद रोती थी। मामा खुद रोती थी और मामा खुद परेशान होती थी कि मैं अपनी बच्ची को क्यों नहीं पढ़ा पा रही, मैं अपनी ख्वाहिश, अपने हस्बैंड की ख्वाहिश में क्यों नहीं पूरी कर पा रही। तो मामा हमें डांट तो देती थी, बट वो रात को बैठकर फिर बहुत खुद भी रोती थी वो। Airij's sad life story is just one of the numerous other cases of families who are struggling to earn a living across many parts of the country. Just across this upmarket neighborhood in Islamabad, there's another poor neighborhood that rings around the more affluent core. Every afternoon, 13-year-old Nansika walks from her home to this empty open-air space to study. Her father works as an odd job labourer on construction sites. He has recently pulled her out of formal schooling after failing to secure jobs during the pandemic. कोरोना से पहले हालात थोड़े बेहतर थे, मजदूरी मिलती थी, काम मिलता था। लेकिन जब से ये कोरोना आया, कोई मजदूरी नहीं, कोई काम नहीं, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। पहले 3 टाइम खाना मिलता था, 2 टाइम, अब फाकों पे जो है ना वक्त आ गया। कभी सुबह का खाना 11 बजे खाते हैं और रात का खाना शाम 7 बजे की बजाय रात 11-12 बजे खाते हैं। अपनी बेटी को कोरोना के बाद स्कूल से निकाल लिया कि कोरोना में मेरे पास फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं होते थे, इसलिए मैं कोरोना की वजह से मजदूरी मिलती नहीं थी और उसे अपने घर में बिठा लिया। वो मेरी बेटी बड़ी इधर घर में ही है, कोरोना की वजह से काम कोई भी नहीं है। मेरे पापा को बोला कि मैंने स्कूल जाना है, मैंने स्कूल नहीं छोड़ना। और फिर मेरे पापा ने मुझे बोला कि भाई मुझे काम नहीं मिलता, फिर तुम्हारी बुक्स और कॉपीज देनी होती है, फिर मैं वो कहाँ से खर्चा पूरा करूँगा। इसलिए जब मैं हमसाए के बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती हूँ तो फिर मेरा भी दिल करता है कि मैं भी स्कूल जाऊँ। फिर मैं अपनी मामा को बोलती हूँ, अपने पापा को नहीं बोलती, क्योंकि मेरे पापा परेशान हो जाते हैं और मैं नहीं चाहती कि वो परेशान हो, इसलिए मैं अपनी मामा को बोलती हूँ। मेरी मामा कहती है कि अब तुम्हारे पापा को कोई काम नहीं मिलता तो फिर कैसे तुम्हें स्कूल भेजूँ, और पता नहीं अब मैंने कब स्कूल जाना है। कैफियत ये है कि मुझे रात को नींद नहीं आती, बच्चों का मुस्तकबिल कोई नहीं है। कोरोना के बाद जब मैंने अपने बच्चों को स्कूल से निकाला तो मुझे रात को नींद नहीं आती। जिस बंदे के बच्चों का मुस्तकबिल नहीं, वो बंदे को नींद कैसे आ सकती है। कोरोना की वजह से कारोबार तो कोई भी नहीं है। मैं इनकी रोटी पूरी करूं या इनको तलीम दिलवाऊं, मेरे वास्ते बहुत मसला है। मुझे रात को नींद नहीं आती। कोरोना की वजह से बच्चे भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूं और मेरे बच्चे मुझसे झगड़ते हैं कि सारी दुनिया स्कूल जाती है, तो मैं कैसे स्कूल भेज सकता हूं जब मेरे पास फीस ही नहीं है। Nansika, however, remains determined to continue her studies and has started attending this open-air school. Teachers here do not take any payments from those who attend their lessons. Anyone, especially those from underprivileged backgrounds, can just show up, sit down and start learning in this school with no chairs, walls or roof above their heads. हम 3 बजे मास्टर अयूब के ट्यूशन जाते हैं, फिर उधर हम पढ़ते हैं। उधर 2 बाजियाँ वो हमें पढ़ाती हैं और 1 बाजी बाहर से आती है, वो भी पढ़ाती हैं और हमें उधर भी बहुत मज़ा आता है। और 6 बजे हमें छुट्टी हो जाती है। जब मैं पहले दिन मास्टर अयूब के ट्यूशन गई तो मुझे बहुत अजीब लगा कि ये कैसा स्कूल है जो खुले में पढ़ाते हैं, और पता नहीं कैसा लग रहा था, अजीब सा। मुझे अपना स्कूल बहुत याद आ रहा था। Further was very 58-year-old fireman and philanthropist Muhammad Ayub, better known as Master Ayub, started this free after-hours school 38 years ago for slum children who won't otherwise be able to afford an education. Here, students are taught basic subjects like Urdu, math and English. This is a book. They can even sit for the national examinations to allow them to move on to higher education. Master Ayub is motivated by his strong desire to give the poor kids in Pakistan the gift of education, to prevent them from falling victim to the world of crime and violent extremism.
तो याद कल मुझे सुनाने हैं फिर, ठीक है हाँ, फिर का इनाम भी दूंगा अगर आप पास हुई। मैं जब भी कोई हादसा होता था या फायर ब्रिगेड के अंदर एज ए फायर फाइटर होने की वजह से, तो ये सोचता था कि किसी का कोई मर गया है, कोई कट गया है, बल गया है, क्यों ना रोज़ाना किसी के काम आऊँ। तो मैंने जिस वक्त इस्लामाबाद की सर्वे की, उसमें मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों पर अजियत हो रही है। छोटे छोटे बच्चे जो काम कर रहे हैं, वज़न उठा रहे हैं, कुछ बच्चे आवारा फिर रहे हैं, कुछ बच्चे नशा कर रहे हैं, कुछ चोरियों में लगे हुए हैं। ये इस्लामाबाद के अंदर भी यही बात है। और कुछ बच्चों को मैंने मांगते हुए देखा है, नशा करते हुए देखा है, तो बहुत बुरा लगा। तो मैंने अपनी वाइफ से मशवरा लिया कि इस्लामाबाद में ये चीज़ है, कहते हैं वहाँ भी यही है। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ इनके लिए कुछ करूँ। तो मैंने तालीम के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आई। और फिर ये भी सोचा कि अगर ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ये बच्चे चोर बन जाएंगे, डाकू बन जाएंगे, दहशतगर्दों के काबू आ जाएंगे, और मेरा मुल्क जो है तरक्की नहीं करेगा बल्कि बहुत पीछे चला जाएगा। तो फिर मैंने एक बच्चा जो हर रोज़ वैगनें धोता था, गाड़ियाँ धोता था, गरीब था बेचारा, ना उसकी माँ थी ना उसका बाप था, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये रोज़ाना तुम गाड़ियाँ धोते हो, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? वो कहने लगा, उसने बड़े बदतमीज़ी से मेरे लफ्ज़ों से मेरा जवाब दिया। उसने कहा जी पैसे तेरा बाप देगा, किताबें तेरा बाप देगा जो मैं पढ़ूँ। Up to 700 students are now being taught by 7 to 8 volunteers in various subjects free of charge. Among others, he wants to make sure that these street children will not give up, but will continue to chase their dream, however tough their family situation might be. वो आएंगे, दाखिल होंगे, घर आते कर दें, छोड़ देंगे, क्योंकि दुकान वाला तो टाइम मांगता है, कारोबार वाला तो अपना काम मांगता है, या मजदूरी करने वाला तो वक्त मांगता है। तो ये बच्चे फिर चंद दिन नहीं आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, और इनके माँ बाप जो है ना मजबूर हो जाते हैं। ये वही बच्चे गरीब गुरबा जो बच्चे नहीं पढ़ पाते और जिनकी अपना मजदूरियाँ लगी होती हैं, और मजदूरी की वजह से वो टाइम दे नहीं पाते। क्यों कि स्कूल बंद रहे, यूनिवर्सिटियाँ बंद रहीं और इम्तिहान तो होने ही होने हैं, तो उनका जो ट्यूशन का कारोबार है हमारे इन लोगों का, वो ज़्यादा बढ़ गया है। और इस तरह से जो उनके ऊपर दबाव था, मुआशी इक़्तिसादी दबाव था फ़ीसें देने का, ये ट्यूशन पे करने का, वो ज़्यादा बढ़ गया है। और इसके साथ ये भी दबाव बढ़ा कि जी आपने या सेल फ़ोन ख़रीदना है या लैपटॉप ख़रीदना, उसके बगैर तो तालीम जारी रख नहीं सकते। तो ख़ानदानों के लिए इस वबा के बाद इक़्तिसादी, नफ्सियाती और समाजी मसाइल में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। What can the government do to help these children and families who have been experiencing severe financial hardships and are struggling to meet their basic needs? Will their dream for a brighter and better tomorrow remain just a dream? Pakistan's education system is going through an unprecedented crisis. Back in 2017, the World Economic Forum had already pointed out that the country was lagging behind many other countries in terms of the quality of education, skills development, and literacy. It made good progress in 2019 when total student enrollments went up to 52.5 million, compared to 51 million the year before. But whatever small gains it made were completely wiped out when the pandemic struck. Thousands of students were kept out of schools during the government's stay-home orders in a bid to stem the spread of the infections. Unfortunately, many of them are not coming back due to the severe economic hardships. But efforts are underway to bridge the learning gaps and bring education closer to these children. Along this small alleyway in Lahore, it's hard to miss the physical presence of this brightly painted bus. It's not an ordinary vehicle. This bus is actually a mobile library. Almost every day, the bus wheels its way through almost every corner of the city, carrying hundreds of books for children. Basrat Kazim is the president of Alif Layla Book Bus Society.
She has been actively involved in providing education to children, especially those coming from disadvantaged backgrounds. The mobile library is a means to reach out to these children. Today, her role has become even more meaningful and critical, especially during the pandemic. कोविड के दौरान और कोविड के बाद भी बहुत से मसले पड़े हैं कि जो बच्चे जिनके घरों में वसाइल नहीं है तो वो तो नहीं पढ़ पाए, जहाँ पे जो दूसरे बच्चे थे जिनके वसाइल थे उन्होंने डिजिटल लर्निंग कर सके, ये बच्चे नहीं कर सके। इनके घर में एक फ़ोन अगर था तो वो भी वालिद के पास या वालदा के पास, तो ये किस तरह इस्तेमाल करते। उसमें मतलब एक तो हमें डिजिटल डिवाइड का कुछ देखना पड़ेगा कि किस तरह से उसको कम किया जाए। The Alif Laila Book Bus Society has served over 3 million children, donating over 1.5 million books in the process, empowering them through reading, imparting knowledge, and equipping them with vocational skills. These selfless acts have enabled the children to enter the next phase of their educational journey with much greater confidence. While these mobile libraries are a welcome sight in urban regions, they're not able to navigate through some of Pakistan's rugged terrains in some of the most remote parts of the country. In Pakistan's poorest state, Balochistan, for example, the library comes in the form of a camel. Every week, a group of camels will set out to different far-flung villages to deliver books to the children. इसी तरह से ये बढ़ती चली जा रही हैं। कोविड के ज़माने में ये खुले फ्री कैमल लाइब्रेरीज़ और लोगों ने बहुत इनको पसंद किया। इससे पहले हमने एक मोबाइल लाइब्रेरी शुरू की थी जो आप इधर देख रहे हैं, दास्तान गो के नाम से, स्टोरी टेलर। ये 1990s में शुरू हुई थी और इसने भी जाना शुरू किया स्कूलों में और लाहौर के नज़दीक एरियाज़ में। बहुत बच्चों को पसंद आई और एक बात एक बच्चे की मुझे कभी नहीं भूलेगी, जब ये उसके अंदर गया लाइब्रेरी में और उसने किताबें देखी तो वो कहने लगा कि स्कूल के अलावा भी किताबें होती हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तो वो जो मैं आपसे पहले कह रही थी कि वो रौनक और रंगीनी जो बच्चों को चाहिए और एक किताब के साथ रिश्ता। There's so many costs to just running a vehicle, and camels are those which can reach on these tracks anywhere in these villages because they are mountainous areas. They are villages which don't have roads still now, no link roads to reach them. Camels can go into the desert also, you know, any part of geographically in that part of Balochistan. 19-year-old Shakil Haider lives in Canal Park, Lahore, together with his parents, 4 brothers and a sister. His father, Muhammad Amin, is an auto mechanic who was earning barely enough to feed the family of 8. When the pandemic struck, Muhammad's work became scarce. He barely works on 2 cars a day. He could only bring home about $170 a month, half of what he used to make before the pandemic. That's the reason why he's no longer able to afford the cost of educating his children. Shakil is among those who relied heavily on the mobile library for his education. It was here that he first became deeply interested in robotics. The library's short courses on electronics, conducted by his mentors, had sparked his interest in the subject matter. किताबें वगैरह पढ़ते थे। एक दिन मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि यहाँ पे हॉबी क्लब है, तो वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स करवाते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट भी करवाते हैं, तो आपने कुछ करना तो मुझे बता दें। फिर मैंने विज़िट किया वहाँ पे, मुझे अच्छा लगा, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में दाखिला लिया। मैं कोविड से 2 साल पहले यहाँ पे आया था, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीखा मैंने यहाँ से सर आसिफ से। उसके अलावा रोबोटिक्स में थोड़ा बहुत काम किया यहाँ पे, बेसिक में रेडियो कंट्रोल कार्स वगैरह और शिप वगैरह। पर ये जो है हर कोई कर रहा है इस टाइम पे, ये वो लेवल अप नहीं हो रहा मेरा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आता रहूँगा तो मैं एक लेवल पे हूँ, मैं अपना लेवल अप करना चाह रहा हूँ किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला होता मेरा,
तो वहाँ पे मुझे अच्छे जो है पार्ट्स वगैरह मिलते हैं, इक्विपमेंट मिलते हैं, वहाँ पे अच्छे मुझे जो है वसाइल मिलते हैं, अच्छी चीज़ें मिलती, और वहाँ पे एडवांस चीज़ें होती है, वहाँ टूल्स वहाँ पे एडवांस होने थे मेरे। Shakil was about to enter college when COVID struck. He had no choice but to start working after his father's meager income was no longer able to support his education. Shakil needs about $9 a month for his school fees, an amount his family can no longer afford. He has now put aside his dream of becoming a robotics engineer due to the lack of funds to support his education, at least for now. He has decided to work with his father instead to help him lighten his financial burden. But he has not entirely given up his dream just yet. मुझे एक खौफ है कि अगर मैं कॉलेज के बाद बाबा के साथ काम पे जाता रहा, यानी शॉप करता रहा, तो मुझे डर है कि जो मेरा इंजीनियर बनने का ख्वाब है ना, वो कहीं पीछे रह जाएगा, और मैं ना ठीक तरीके से पढ़ सकूँगा और ना मैं अपने वर्कशॉप पे सही टाइम दे सकूँगा। तो लेबर कर रहे हैं, अगर हम एक बंदे में है जज्बा है कि वो पढ़े और पढ़ के अच्छी कोई चीज़ पाकिस्तान के लिए करे, दुनिया के लिए कोई बेहतर चीज़ निकाले, बेहतर हल तलाश करे किसी भी मसाइल का, तो उसके लिए अच्छी यूनिवर्सिटी हो, अच्छे इदारे हो, तो उसमें पढ़ते हुए साथ में मैं अपना शौक़ भी पूरा करूँ, वहाँ पढ़ूँ भी शौक़ से। ये इस एज ग्रुप के बच्चे हैं जो इधर उधर फिरते हैं और वो स्कूलों में नहीं है, तो ज़ाहिर है कि हम अपना इंसानी सरमाया ज़ाय कर रहे हैं अगर हम इनको ज़ेवर तालीम से रास्ता नहीं करते। और गुर्बत से निकलने का बेहतरीन तरीका तालीम है, और तालीम अगर नहीं है तो आप फिर ज़िम्मेदार हैं कि आपने गरीब को गरीब और मुफलिस रखना है, और ये हमारा हुक्मरान तबका है, ये उनका किरदार है जो काबिल मज़म्मत है और शर्मनाक है। जब बच्चे स्कूल में होंगे तो तब ये बच्चे कुछ बन सकेंगे, गरीब तो फिर गरीब ही रहेगा, कोई ड्राइवर बन गया, कोई खानसामा बन गया, और लेकिन अक्सर उनमें से लोग आप जाके देखें चौकों में कि पाकिस्तान के किसी छोटे बड़े शहर में देखें, सुबह को एक मंडी से लगी होती है, लोग बैठे हुए हैं कि आज हमें कोई दिहाड़ी लगाने के लिए ले जाए, कि किसी तरीके से 700, 800, 1000, 1200 रुपये हमें मिल जाए, उनको वो ले जाते हैं, शाम तक लोग बैठे रहते हैं, कोई नहीं आता। But what options are left for them? Is there more that the government can do to help students like Shakil achieve his dream and help pull the family out of its misery? COVID-19 has dealt a big blow to Pakistan's economy. To help stave off a full-blown crisis and relieve pressure on its fragile economy, the government has had to rely on the International Monetary Fund, or the IMF, for financial assistance. The good news is, its GDP has clawed its way back to a 3.94% growth rate last year, from a negative 0.47 rate the previous year. The bad news is, the economy is far from stable due to its record inflation and a growing debt burden. Unemployment remains very high, even among university graduates. More than 30% of them are currently jobless. That includes 24-year-old Aisha, who graduated with a degree in economics from Allama Iqbal Open University, Islamabad. She has been looking for a job for almost 1 year now, but to no avail. मैंने जब ग्रेजुएशन की तो काफ़ी जगह पे इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन इशू ये था कि अच्छी डिग्री होने के बावजूद मुझे किसी ने अच्छी जॉब की ऑफ़र नहीं दी। इवन काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पे इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन जॉब की ऑफ़र कभी भी नहीं आई, तो वो काफ़ी उसने मुझे डिसअपॉइंट किया। लेकिन फैमिली को मैं तसल्ली देती रही कि नहीं हो जाएगा, बट मुझे पता था कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी। मेरा मशवरा उनके लिए यही है कि देखें, जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती ना, आपको चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करो। 21-year-old university graduate from Handad University, Muhammad Zahir, has also found himself in a similar predicament.
He graduated in January 2021 in the field of computer science. But until today, he still hasn't found a job that he wants. As the weeks and months went by, Zahir became more restless and desperate. He felt that he had to do something to help relieve his family's financial burden, especially during the pandemic. He then decided to start a business selling homemade macaroni from the boot of his car at Islamabad's G9 market. मैं मार्केट में कुछ नया लाना चाह रहा था, जैसे कि एक तो मेरा नया आइडिया ये था कि कार में कुछ सेल करना, देन सेकंड ये था कि होममेड सेल करना, घर का बना साफ़ सुथरा और हेल्दी खाना मैं करता, मैं सप्लाई कर सकूँ. Zahir was initially hesitant to carry on with the business of selling food out of his old Suzuki Meyran. Firstly, he was a little embarrassed about what he was doing. Secondly, he didn't know how the people would react to the way he conducted his food business. But he soldiered on with the support of his family members. क्योंकि पब्लिक डीलिंग मेरे ख्याल से एक मुश्किल चीज़ मेरे लिए आ रही थी. फिर मैं जब गया मैंने गाड़ी जब पार्क की तो फिर मैं बाहर निकल ना पाऊँ. मैं ये सोचूं कि यार अब मैं किस तरह निकलूँ. फिर मैंने बिस्मिल्लाह की और इस तरह पोस्टर वहाँ पे लगाया, गाड़ी पे लगाया. मैं फिर अंदर आ गया गाड़ी के. उसकी वजह ये हुई कि मैं ये सोच रहा था कि यार ये बहुत मैं और टाइप जॉब कर रहा हूँ. लेकिन फिर ये हुआ कि पोस्टर पढ़ा लोगों ने, तो दोबारा लोगों ने फिर पूछा, नॉक किए, गाड़ी नॉक करके बोला कि भाई आप मैकरोनी सेल कर रहे हैं तो हमें दीजिए. इस तरह ये मतलब मेरे साथ हुआ ऐसे, जो टेस्ट करे तो एक दफ़ा कि यार वाकई ये घर की बनी हुई. And to his surprise, the people got hooked to his macaroni after the first bite. But Zahir's business really took off after a customer posted a picture of him selling macaroni from the boot of his car on social media. A few days later, the post went viral. Customers came from far and wide to try Zahir's homemade macaroni. He could never have imagined that a single post on social media could change his life forever. तो उस वक्त मुझे फील हुआ कि हाँ यार, अब मुझे ऐसा लगा कि यार बड़ा मतलब कि अचानक से मतलब फिर कस्टमर आना शुरू हो गया. नेक्स्ट डे जब मैं गया तो मेरे से पहले मेरे 4 से 5 कस्टमर वेट कर रहे थे. वहाँ पे रश बनी हुई थी. वहाँ पे कस्टमर, मैंने ऐसा गाड़ी लगाई तो एकदम कस्टमर मेरी तरफ आया, सलाम दुआ कि आप ज़हीर भाई हैं. मैंने कहा जी मैकरोनी वाले. जी. मैंने कहा, कहते हैं अच्छा आप मैकरोनी सेल कर रहे हैं. मैंने कहा जी मैं सेल कर रहा हूँ. कहते हैं अच्छा हमने आपको वहाँ पे देखा था. अचानक से दूसरा आ रहा, तीसरा कस्टमर. While Zahir's business has really taken off, Aisha's food business also had a slow start. Aisha started out selling shawarma, a variant of a kebab with thinly sliced roast meat, around the same time as Zahir's. फिर उसके साथ करते करते थोड़ा लाइक 3 months बाद 4 months बाद थोड़ा सा मेरा काम स्टेबल होना शुरू हुआ. मेरे जो टेस्ट था वो डिलीवर होना शुरू हुआ कस्टमर के आगे. कस्टमर को टेस्ट पसंद आना शुरू हुआ, जिसकी बेस पे मेरा थोड़ा कस्टमर बनना शुरू हुआ. थोड़ा सा मैंने मैंने हल्का हल्का कह लें कि रेंट्स मेरा अफोर्ड होना शुरू हो गया था. तो फिर ये था कि आफ्टर 1 year और 1.5 year मैंने थोड़ा सा और क्या कहते हैं सपोर्ट ली, फाइनेंशियल सपोर्ट ली. उसके बाद मैंने ये रेस्टोरेंट ओपन किया. इसमें भी काफ़ी स्ट्रगल फेस की. और ये कि अब देख लें आपके सामने कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्ट्रगल के बाद आज मैं यहाँ एक जगह पे एक रेस्टोरेंट ओपन करके बैठी हुई हूँ. After struggling for months, Aisha managed to overcome her initial problems. Backed by a group of loyal customers, she was able to take her small food business and take it to the next level and open a restaurant. Now, she has expanded her offerings to include traditional South Asian cuisine. आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ दूसरों के लिए क्रिएट कर सकते हो. आप लोग एम्प्लॉयमेंट दूसरे लोगों के लिए, दूसरे बच्चों के लिए, दूसरी जनरेशन के लिए क्रिएट कर सकते हो. तो आपको ज़रिया बनना चाहिए उस एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए. हज़ारों बच्चे यूनिवर्सिटी से निकलते हैं लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का एक वो बना हुआ है मार्केट में. ढेर बच्चे क्या कहते हैं जॉब्स नहीं मिल रही. एजुकेशन है बट जॉब्स नहीं है. तो उनको लिए मैं यही मशवरा दूंगी कि आप लोग जॉब्स की तरफ नहीं भागे, आप लोग छोटा सा कोई अपना सेटअप करें. Aisha and Zahir are fortunate. They're both well educated, and that has enabled them to think of options to get themselves out of the abyss and overcome whatever challenges that have come their way.
but not the millions of other Pakistani children who are currently out of school, many of whom have found their hopes and dreams completely out of reach. For Airij, life feels meaningless for her these days. Her dad, who was the family's sole breadwinner, is now gone. The family has also fallen deeper into poverty. And now she has had to abandon her college education because the family is just too poor to support her. पहले तो मेरी लाइफ एक बहुत खुशहाल थी, लेकिन कोविड ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। पहले उसने मेरे बाबा मुझसे छीन लिए, फिर उसने मुझसे मेरी स्टडी छीन ली। उसके बाद मुझे ज़िंदगी का मतलब पता नहीं था। मैं कहती थी पता नहीं ज़िंदगी का मतलब क्या है, मकसद क्या है ज़िंदगी का, क्योंकि मैंने सब कुछ तो छोड़ दिया है। मैं जो करना चाहती थी मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। अब मेरी ज़िंदगी में मकसद क्या है? ना मैं पढ़ती हूँ, मेरे बाबा मुझसे दूर चले गए। हर वक्त बस घर पे बैठे रहना, सोचते रहना कि मैं जो करना चाहती थी वो मैंने क्यों नहीं किया। सब कुछ तो मुझसे छीन गया। अब मेरा इस दुनिया में कोई मकसद नहीं है, कब सब कुछ ज़मीन पर आ गया मैं जो करना चाहती थी। तो जो ही मैशत ज़रा बेहतर होगी तो मेरा ख़्याल ये है कि हम पेंडेमिक से पहले वाली सूरत हाल से भी बेहतर कर सकते हैं, और हमें करना चाहिए कि दबाव अंदर से भी और बाहर से भी बहुत ज़्यादा है कि पाकिस्तान को अगर इसी तरीके से पसमानदा रह गया, गुर्बत नौजवानों में बढ़ती रही, तो उसका ताल्लुक़ सलामती से भी है, अमन आमा से भी है, इंतहा पसंदी से भी है, और जो ख़तरनाक इंतहा पसंदाना तहरीकें चलती हैं माशरों में उनसे भी है कि कैसे उनको बचाया जाए। और बेहतरीन जो तरीका है और आसान तरीका है कि तालीम दें, शऊर पैदा करें, अमन व अमान और इस्तेहकाम पैदा करें, ताकि आपकी मईशत भी आगे बढ़े, ताकि आप मसाइल से बचें जो पाकिस्तान को जिनका माजी में सलामती और अमन व अमान के लिहाज से सामना रहा है। Many dreams have been shattered by the pandemic, and many lives have been lost since the outbreak began, leaving behind children who are struggling to come to terms with the loss of their loved ones. But there are glimmers of hope, especially those who have the courage to rise up to the challenge amid all the adversity. Sadly, there are also others who will face a bleak future, whose hope, spirit, and energy have been sapped away forever, becoming part of a lost generation.